Hello. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Siddharth Dave, and today we are going to discuss about one method which is known as the hydroponics, right? See, this method it is generally used in the agriculture, okay, for creating or for producing the numbers of plants in a less place, okay, without soil. सो ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स है जिसमें सॉइल का यूज नहीं होता है और प्लांट जो होता है वो कंप्लीटली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो होता है ओके तो एक्चुअली ये टेक्निक जो है इट इज जनरली यूजफुल फॉर चेकिंग द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ऑफ द प्लांट ओके सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न this technique which is known as the hydroponics okay the methods to study the mineral requirements of plant. Now see, the basic needs of all living organisms are essentially the same. Okay, and along with the sunlight, CO2 and oxygen and water, plants also need some of the macronutrients, macroelements like carbohydrates, proteins, vitamins, oils, right? Along with this, some of the natural fertilizers which are already present in the soil in the form of NPK, that is nitrogen, potassium and phosphorus. Okay, so sometimes what happen ke some of the elements which are there which plant could not accept it or could not get it. Okay, so due to that what happen, the deficiency symptoms which start developing into that plant. Okay, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि NPK है, इसमें से पोटेशियम प्लांट को नहीं मिल रहा है तो क्या होगा कि प्लांट पोटेशियम की डेफिशिएंसी शो करेगा, राइट? जिसकी वजह से उसमें कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप होंगे. ओके, एंड ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी सिम्टम्स द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीजेस. ओके, so in this video we are going to learn about the technique by which you can check this deficiency. Okay, you can easily check that which mineral element is deficient, right, in the plant. So if you check the deficiency of that particular mineral element, so you can easily that mineral element in the soil. Okay, अगर आपको किसी भी प्लांट की किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी मालूम हो गई कि ये प्लांट को ये मिनरल एलिमेंट सॉइल में से नहीं मिल रहा है, ओके, अगर आपने ये पता कर लिया तो आप इजीली वो न्यूट्रिएंट एलिमेंट बाहर से ऐड कर सकते हो, राइट? सो यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बाय चेकिंग द डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टेक्निक बाय विच यू कैन check the deficiency of that mineral element. Okay, or you can easily check that which mineral is required or which mineral is essential for the plant. Okay, now see, so in this technique our main aim is to determine the mineral nutrients which is essential for the plant. For that we need to prepare two nutrient solution A and nutrient solution B. In nutrient solution A, we have to add all the mineral elements which is required for the normal growth and development of the plant. Okay, and in nutrient solution B, we have to add all mineral elements except one. For example, potassium. Okay, nutrient solution A है जिसमें आपने सारे mineral elements डाल दिए which is required for the normal growth and development of the plant. But solution B है जिसमें आपने सभी minerals डाले लेकिन एक mineral element नहीं डाला है जो कि है for example potassium. Okay, you can see in this diagram which is given in the NCERT textbook. This is a typical setup for nutrient solution culture. Here you can see that the nutrient solution is filled in a container. Okay, left side you can check the funnel for adding the water and nutrients, right? You can see the cotton which is there. Okay, right hand side the aerating tube it is there with the help of which you can provide the aeration. It means you can provide oxygen to the roots, because if the oxygen is insufficient, okay, then roots will not grow, roots grow nahi honge. So for that aerating tube is there. So
here what we are actually doing, we are growing a plant which is completely in a nutrient solution without soil. Okay, and this technique is known as hydroponics. Okay, that growing a plant completely in a nutrient solution without soil. Okay, that technique is known as hydroponics. This technique was demonstrated by Julius von Sachs in 1860. Okay, and he demonstrated for the first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of the soil. Okay, so this is the hydroponics technique. Okay, now see in this figure, the left side you can see that funnel for adding the water and nutrients. Okay, in this funnel the solution must be replenished regularly. मतलब कि solution को आपको replace करना पड़ेगा regular basis पे, otherwise what happens, the growth of the plants will be stopped. Okay, with the help of aerating tube you have to provide the aeration, otherwise plants will die due to the anoxia, मतलब कि ऑक्सीजन की deficiency से. Along with this, whatever the container which you are selecting, the container should be paint black or it should be wrapped to keep out the sunlight so that growth of the algae can be reduced, right? जैसे मैंने समझाया ये एक लेट्यूस प्लांट का एग्जांपल है. सॉल्यूशन ए है which lettuce plant growing in a complete nutrient solution, or here solution B is there which is lacking one element, for example potassium. तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है. द फर्स्ट इज प्लांट थ्राइव्स, इट मींस इट कैन ग्रो प्रॉपरली. अगर हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला है जैसे कि पोटेशियम, तो एक ऑप्शन मिलता है कि प्लांट्स विल ग्रो इन अ प्रॉपर मैनर, दैट इज प्लांट थ्राइव्स. तो हम बोल सकते हैं कि द टेस्ट एलिमेंट मे नॉट बी एसेंशियल. अगर प्लांट में वो मिनरल एलिमेंट हमने नहीं डाला है फिर भी प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो मतलब कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि अगर प्लांट्स विल ग्रो एबनॉर्मली, अगर उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई, ओके, उसकी ग्रोथ हाइंडर हो रही है, इट मींस द टेस्ट एलिमेंट में बी एसेंशियल. जैसे कि हमने यहाँ पर पोटेशियम नहीं डाला है, तो सेकंड ऑप्शन आप देखो कि प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो यू कैन इजीली से दैट कि दैट मिनरल एलिमेंट इज एसेंशियल. ओके, एसेंशियल एलिमेंट यानी कि द एलिमेंट in the absence of which plants cannot complete their life cycle. Okay, so here you can easily check the nutrient deficiency of that particular element. Okay, so what you can conclude from this experiment, you can say that by this method that hydroponics culture can determine which mineral elements are actually essential nutrients element. Okay, here you can see that in the two figures, first is solution A, कंट्रोल है जिसमें ग्रोथ प्रॉपर है, सॉल्यूशन बी जहां पर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, मतलब कि इट शोइंग दी पोटेशियम डेफिशिएंसी. ओके, बाय दिस मेथड यू कैन इजीली चेक the essential elements and you can easily identify, okay, and you can easily discover the deficiency symptoms. Okay, this hydroponics has been successfully employed as a technique for commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce plant. Okay, this is a technique, this technique is showing NFT technique, which is a nutrient film technique. Okay, this is a hydroponic technique where in a very shallow stream of water containing all the dissolved nutrients required for the growth of the plant is circulated past the bare roots of the plants in a water tight channel. मतलब कि यहाँ से एक तरफ से न्यूट्रिएंट जा रहा है, दूसरी तरफ से न्यूट्रिएंट आ रहा है. ओके, ये कंटिन्यूअस फ्लो कल्चर है, राइट. आप इस तरीके से प्लांट ग्रो कर सकते हो. इस तरीके से आपको अरेंज करना होता है ए शेप में, ताकि ईच एंड एवरी प्लांट विल गेट द सफिशिएंट सनलाइट. ओके, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, राइट. एंड